discuss the introductory topics of our second lesson, that is electrostatic potential and capacitance. Basically, this is a subunit of the first lesson, that was electrostatic. The topics covered in today's lecture are: we will discuss the definition of electric potential, and we will find out the formula for electric potential at a certain point due to a source charge. We'll discuss the definition and formula for potential difference. Thereafter, we will find out electric potential due to a dipole at two different points, at an axial point and at a point on the equatorial line of the dipole. Lastly, we will calculate electric potential due to a dipole at a general point. So our first topic is electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, अगर हम लोग इसके बेसिक डेफिनेशन को देखें तो फॉर्मूला डिराइव करना वो काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज. कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता किसके लिए? एक सोर्स चार्ज के लिए. और हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कहाँ करते हैं? तो इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा, एक सोर्स चार्ज Q और उससे सर्टेन डिस्टेंस एक पॉइंट है R. किसी एक सर्टेन पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं. may be defined as, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है? We have to calculate the amount of work done, कितना वर्क डन हमें करना है, to bring a unit positive test charge, एक टेस्ट चार्ज. इस डायग्राम में टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट किया गया. तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना है. कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. दैट पॉइंट मीन्स जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे पॉइंट P. तो हमें टेस्ट चार्ज Q0 इसे लाना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P against the electrostatic force exerted by the source charge. जो ही हम लोग टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के क्लोजर लाते हैं, as you are seeing in the diagram, there will be electrostatic force of repulsion between the source charge and the test charge. So we have to bring the test charge from infinity to a point against the electrostatic force exerted by the source charge. So basically to say, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सोर्स चार्ज के लिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, which is located at a certain distance from the source charge. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए we have to calculate the work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point. अब हम लोग इसके डेरिवेशंस पे फोकस करते हैं. In this diagram, you are seeing a source charge Q that is located at a certain point. इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फील्ड के अंदर लोकेट किया गया एक पॉइंट P which is situated at a distance R. We have to find out potential at point P
due to this source charge. For this, we have to bring a test charge from infinity to this point. सबसे पहले हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज से एट ए डिस्टेंस x प्लेस करते हैं. इस सिचुएशन में इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा by the source charge, which is given by F equals to K product of charges means Q0 divided by x का स्क्वायर. चूंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, its direction will be away from Q. Now we have to bring this test charge from A to B by a small displacement dx. In order to bring this test charge from A to B by a small displacement dx, we have to do certain amount of work done against this electrostatic force of repulsion. So small amount of work done in moving the test charge from A to B, that can be given as dw equals to F dot dx. That is F dx, as you are seeing, force and displacement are directed opposite to each other. That means angle between them is 180 degree. So F dx cos 180 degree. That is minus of F dx. Now if I substitute the value of F, that is minus kq q0 by x square to dx. This is the small amount of work done in order to bring the test charge from A to B. Now we have to calculate the total amount of work done to bring the test charge Q0 from infinity to point P at a distance r. So the total amount of work done in bringing the test charge from infinity to a point P at a distance r is given by W equals to integration of dw, that is minus kq0 x square dx, and the limit varies from infinity to r, that is minus kq0 1 by x square का integration minus 1 by x limit infinity to r, that is kq0 1 by x from infinity to r, kq0 1 by upper limit, that is 1 by r, minus 1 by lower limit 1 by infinity. Something divided by infinity is 0. So W equals to kq0 by r. This is the amount of work done to bring a test charge Q0 from infinity to point P at a distance r. But as per the formula of potential, in order to calculate potential at some point, we have to divide work done by the test charge. So Vp, potential at point P, is W, work done to bring the test charge from infinity to P divided by test charge. That is Kq Q0 by R divided by Q0, that is Kq by R. So this is the formula for potential due to a source charge Q at a distance R. इस फॉर्मूले से साफ दिख रहा कि पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. If I take potential due to a positive source charge, it will be positive, and if I take potential due to a negative source charge, it will be minus kq by r, that is